Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 1, that is characteristics and life processes of organisms. Today I will deliver its 9th lecture, and in today's lecture what we will do is we will study about the classification of plants. Previous lectures में we were discussing about the classification of animals. Today we will discuss about plants. Similarities among the flowering and non-flowering plants. So my dear students, जैसे कि आपने previous lectures में देखा कि कैसे हमने animals को classify किया among vertebrates and invertebrates. फिर हमने पहले lecture में उनकी similarities पढ़ी, and in the next lecture we discuss about the differences between vertebrates and invertebrates. Today we will discuss about the classification of plants, and they are classified as flowering and non-flowering plants. और आज हम उन दोनों की क्या similarities हैं, we will discuss about that. So my dear students, now let's quickly move forward towards the recap first. So in the previous lecture, as you know, we would discuss about the differences among the vertebrates and invertebrates. So quickly tell me, what are differences among vertebrates and invertebrates on the basis of movement, body shape, size, skeleton, and backbone? So in invertebrates, there is no proper mode of movement, whereas in vertebrates, there is proper mode of movement present. इसके अलावा जो body structure होता है इनका, the vertebrates have well-developed organs and well-developed body, whereas invertebrates do not have well-developed organs and body. Next is the invertebrates have no backbone, vertebrates have a backbone. Invertebrates have an exoskeleton, whereas vertebrates have endo-inside skeleton. So these are the differences between vertebrates and invertebrates. I hope you remember them all. So my dear students, अब आगे चलते हैं and let's move forward towards an activity. So for this activity, look at the pictures very carefully. आपको कुछ flowers की pictures नजर आ रही हैं. This is the sunflower, and in the next picture this is a money plant. और आपको पता है कि उसके ऊपर जो money plant है उसके ऊपर flowers नहीं लगते. So in this way we can say this is a flowering plant, and this is a non-flowering plant which do not have flowers on it. Okay. So my dear students, what are flowering plants? Any plant which bear flowers on it, जिसके ऊपर फूल लगते हैं, that is a flowering plant. So what are non-flowering plants? जिनके ऊपर फूल नहीं लगते. So simple. So there are non-flowering plants. So my dear students, name some flowering plants you know. Sunflower, roses, tulips, hibiscus. These all are flowering plants. So can you name some of the non-flowering plants? आप कभी सोच के बताएं कि आप कभी मरी गए हैं? ओके, नाउ क्विकली थिंक एंड टेल मी कि आपने वहां पाइन ट्रीज देखे हैं? देवदार के दरख्त देखे हैं कभी? दे आर कॉल्ड द पाइन ट्रीज. दे आर नॉन फ्लावरिंग. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, क्योंकि उसके ऊपर कोई फूल नहीं लगते. So my dear students, now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So by the end of today's lecture, all the students will be able to classify plants in terms of flowering and non-flowering with examples. आप examples भी दे पाएंगे, and you will also be able to analyze the differences and similarities. Today we will discuss about only similarities in flowering and non-flowering plants. So first of all, क्या classification है plants की? Flowering and non-flowering. We will give examples of them, and then we will discuss about the similarities of flowering and non-flowering plants. So my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective here. So Allah says in Quran, it is He who spread the earth for you and made it in parts for you and sent down water from the sky, and then through it we brought forth many species of diverse plants. So my dear students, इस आयत से कितना वाज़े हो रहा है कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई, और बारिश से जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे पौधे उगाए, लेकिन वो जो पौधे हैं दे आर डाइवर्स, दे आर सो मच ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सो इसीलिए हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप कर दिया इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. So my dear students, from here let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly listen to the question very carefully and then answer. Let's quickly move forward towards the reading first. Okay, my dear students, what similarities do you see among flowering and non-flowering plants? कोई similarities क्या आपको नजर आती हैं flowering या non-flowering plants में? दोनों के leaves होते हैं, दोनों में stem भी होता है, दोनों की roots भी होती हैं, दोनों जमीन से उगते हैं. So these are all the similarities among the plants.
लेकिन इसके अलावा इनके अंदर डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम सिमिलैरिटीज पे फोकस करेंगे। So my dear students, I request you all to please open page number 11 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly start the reading. I request you all to put your fingers where I will read. Classification of plants. Plants have a wide variety of sizes, shapes, colors, habitats, and ways of reproduction. Therefore, they are classified in many ways. One of the ways to classify plants is on the basis of the presence of flowers, that is flowering, and non-flowering plants, that means which do not have flowers. So my dear students, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई इसलिए करते हैं ताकि हम उनको इजीली स्टडी करें। सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया एनिमल्स में और प्लांट्स में, उसके बाद हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट वी क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, सो ताकि हम इनको इजीली स्टडी कर सकें, और हमने एक जैसी चीजों को एक ग्रुप में डाल दिया और बाकी एक जैसी को दूसरे ग्रुप में डाल दिया। सो हमने प्लांट्स को किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं? सम हैव फ्लावर्स while others which do not have flowers they are non flowering। ठीक है, इस तरीके से हम इनको ग्रुप करें। सो नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, which bear flowers। okay, start reading with me। flowering plants, the plants that produce flowers at a certain point during their life cycle is called flowering plants. A flower is a reproductive part of the plant which produces seeds. Flowering plants are also called angiosperms. It is the largest group of plants. Examples include maize, sunflower, roses, and most of the fruit plants. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं। उनकी लाइफ साइकिल में, उनकी जिंदगी में किसी भी दौरान उनके ऊपर जब फूल लगते हैं, सो दैट मीन्स दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। देन द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, so because they make seeds, they make fruits, so that is why they are the reproductive organs। okay, क्योंकि इन्हीं से दोबारा जो है seeds produce होने के बाद नए plants grow करते हैं, so this means they are the reproductive organs, और इन्हीं के अंदर मेल और फीमेल organs जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये सबसे बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, ठीक है, इट इज द बिगर ग्रुप, ये नॉन फ्लावरिंग से भी बड़ा ग्रुप है, और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? मेज, सनफ्लावर, और जितने भी तकरीबन फ्रूट्स हैं they are included in flowering plants। okay, so this is about the flowering plants। now let's discuss about the non flowering plants। okay, again read with me, it is on page number 12। non flowering plants, the plants that do not produce flowers at any stage of their life cycle are called non-flowering plants। Some of the non-flowering plants bear naked seeds. They are called gymnosperms। Non-flowering plants reproduce through spores. Examples are mosses, ferns, and coniferous plants। So my dear students, जो non-flowering plants होते हैं, इनके ऊपर इनकी लाइफ साइकिल में, इनकी जिंदगी में कभी भी फूल नहीं लगते, और इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर शेल नहीं होता। नेक्स्ट इज दे ऑफन आल्सो प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, यानी कि इनके ऊपर सीड्स नहीं होते, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कि इनके लीव्स के नीचे लगते हैं, ये उनकी मदद से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? मोजेस, फर्न्स, दीज आर द शॉर्टर प्लांट्स, और बड़े प्लांट्स में इनकी एग्जाम्पल है कॉनिफेरस ट्रीज, जो कि पाइन ट्री की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। और इस तरह के प्लांट्स को, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स भी कहा जाता है, जैसे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। कीप दिस इन माइंड। Okay, now let's discuss about the similarities of flowering and non-flowering plants। okay, read with me again, similarities among flowering and non-flowering plants। being members of a larger group named plant, flowering and non-flowering plants possess some similarities features such as, क्योंकि दोनों ही प्लांट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो इस वजह से इनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। नंबर 1, बोथ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या है? रूट्स भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ ग्रुप्स रिप्रोड्यूस, दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन द प्रोसेस इज चेंज्ड, लेकिन रिप्रोडक्शन होती है। All flowering plants and some of the non-flowering plants have seeds। ठीक है, जितने भी flowering plants हैं और कुछ non-flowering plants के अंदर seeds होते हैं।
Members of both groups prepare their food by photosynthesis. और दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जिससे इनको एनर्जी मिलती है, दैट हैपन्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. दोनों में प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस का सेम है. So my dear students, these are the similarities among flowering and non-flowering plants. So let's quickly recap it. Classification क्या है flowering and non-flowering है plants की. Then let's discuss about flowering plants. Flowering plants जो है इनके अंदर फूल लगते हैं. They reproduce, इनका reproductive organ जो है वो flower है. इनके अंदर seeds होते हैं और ये largest group है. So maize, sunflower, these are the examples of flowering plants. Then comes non-flower. These are some other examples of flowering plants: roses, periwinkle. Then comes the daisies and most rose. Okay. Now comes the non-flowering plants. ये flowers के through reproduce नहीं करते. इनके अंदर spores होते हैं, इनके seeds naked होते हैं और इनकी examples है ferns, mosses and coniferous trees. So these are ferns, mosses and ferns. This is the coniferous tree and these are Thahuja plant. These are also non-flowering plants. So my dear students, similarities क्या है दोनों के दरमियान में? Let's have a look. So क्योंकि दोनों ही plant group से ताल्लुक रखते हैं, so both have roots, stems and leaves, both reproduce, both have seeds and both have photosynthesis process in them for making of food. Okay, so these are the similarities of flowering and non-flowering plants. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. Quickly, tell me what are flowering plants, which bear flowers. Very good. What are non-flowering plants, which do not bear flowers at any stage of their life. Next is, what are the similarities among flowering and non-flowering plants? Both have root, stem, leaves. Okay. Next is, both have photosynthesis process in them. And next is, both have seeds. यानी कि flowering plants में तो seeds हमेशा होते हैं, but some of the non-flowering plants also have seeds in them. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your roll number and then complete the worksheet. Tell me what are the flowering plants, give their example. What are non-flowering plants? Then again give example. You can take help from the book also. Then write the name of the following plants in correct form. That what are they? Mose, they are non-flowering. Daisies, flowering. Pine tree, non-flowering. Ferns, non-flowering. Tulip, flowering. Sunflower, flowering. Snake plant, non-flowering. Rose, flowering. Conifer, non-flowering. Orchids, flowering. So now write down the similarities of flowering and non-flowering plants here. Okay? Or you can write their names here. You have to write their names here in the column. So my dear students, now is the time for homework. For homework, what you need to do is you will do question number 3 from section B on page number 23. So question 3 from section B. Classify plants on the basis of the presence of flowers. ठीक है? So आपने इनको classify करना है among flowering and non-flowering plants. और आप दोनों की जो है वो definition दे दीजिएगा. So my dear students, now is the time for wrap up. So what have we learned today? Today we have learned that flowering plants produce flowers in their life cycle, also known as angiosperms. Non-flowering plants do not produce flowers, are also known as gymnosperms. Similarities: both have stem, roots and leaves, both reproduce and both have seeds, both produce their food by photosynthesis. So my dear students, this is it. Today you have classified plants into them two groups, flowering and non-flowering, and then you discussed their similarities also. So I hope you have understood it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.